and we'll start sharp at 3 and Q&A box के अंदर whatever questions you have for Talha, आप kindly उसको mention कर दें. That will be very, very helpful for us. So we have one question in our Q&A box. Which business you are going on? Abdul Rahman, can you be a little more specific about, what do you mean? We're talking about IT business and it will be based primarily on, software engineering and all of that. So be a little more specific about your questions. That will be very, very helpful. Okay, so we have, I can't really see the name, but he's a data scientist and freelancer. Then we have a software engineer from Alabama, USA, Mohammed Asjad Salahuddin. He's an entrepreneur and looking forward to gain insights from the webinar to enhance my IT business. Mohammed, I can't see your full name, but it will be great if आप बता दें कि आपका business exactly है क्या, what services you're providing. Then we have, I'm from Lahore and I'm a student from University of Lahore. We have another person, he's from Rawalpindi, he's a full stack developer, freelancer, digital marketer, CEO of Senti GM Soft. Yes. Can you please specify आपका business exactly क्या services provide करता है? That will be very helpful for us. Then we have Murtaza Hussain. He's a UX UI designer and a freelancer on Fiverr and Upwork. He's from Karachi. Samir Khan is a data scientist from Peshawar. Amir Mursaleen is an SEO expert and content writer. Guys, it will be great. I'm reading out all of these things. इससे थोड़ा idea हो गया और तलहा आपको भी idea हो रहा होगा कि काफी audience का mix है from different cities, from different fields as well. So हम लोग उसके accordingly run करेंगे. अच्छा, Q&A box के अंदर will be great अगर आप questions को डालें और not the city and what you're doing. जो question specific हैं वो आप Q&A box के अंदर डाल लें. Okay, we have IT head from Art Mill Studios, accountant from Sialkot. Guys, a very important question is, what are you expecting to learn from this webinar? That will really help us in, driving the direction or deciding which direction to take the webinar in. So I see 64 attendees have joined in, which is great. Abdul Moiz Ishaq is providing services. Unka kafi, Biz Soul Tech. Web applications, mobile applications development, great. Yeah, so will be great अगर आप expectations अपनी बता देंगे. What do you actually want to learn from this webinar? आप लोगों को क्या लगता है? So Mohammed, I can't see his name, but how to expand business, new strategies, marketing techniques, more business marketplaces. Okay, great. Adnan is from a digital agency registered in USA, freelance software engineer. Okay, so now what I'm going to do is कि हमारे पास sizable audience आ गई, तो हम polls जो हैं उनको start करेंगे. So guys, take quick 30 seconds to fill out these two questions. So I'm going to launch it. The first question is very simple. It is, are you a Payoneer user? Yes, no, created an account but never got to use it. So दोनों में से options आप select कर लें which is relevant for you. So I see, which is very encouraging. 75% are already Payoneer users, 13% are not, and the ones who are not would be great to hear why are you not a Payoneer user. And 18% created it once but never used it. Guys, ye jo 18% who have created it but never used it, do join us on our Payoneer Pakistan official group on Facebook, and please share why haven't you been able to use it. I would love to learn more about it because we want you guys to use our service as well. 72% are Payoneer users. I think 80% people have voted in. We have 74 attendees. I'm expecting this number to go up even further, but I think we have a sizable, sizable audience. Okay, I'm going to end this poll, and I am going to launch the second poll, which is about the profession. So here it is. So please share what is your profession. We have the option of IT professional, own an IT company, sales and marketing, finance professional, freelancer, and other. So quickly, if you guys can share with us, and I like the number of attendees going up. Talha, a lot of people have come to see you, 81 attendees. Nice. So really, is it the same every time or is it just this time around? No. We usually have around 60 to 100 ke beech mein hota hai, and I'm expecting, and I hope the number goes up till 100. Hopefully. So that's the target for us. No, but nice. Given Ramzan, 80 is a very good number. I think given Ramzan, yeah, I think it's a very good number. Usually, hum log ke average is around 60 to 70, so we're already above that. So nice. That's what people want to see you, Talha.
Okay, great. 76% have voted in, guys. Let's bring it up to 80% who have voted in. Yes, 79%. Let's just make it 80%, guys. 80%. So I'm going to close it on 80%. 82% actually. So 27% of people are IT professionals. 21% own an IT company. 12% are sales and marketing professional. Finance professionals are 4%. 24% are freelancers and others is 10%. Will be great अगर others का भी हमें पता चल जाए कि आप लोग कौन सी profession से हैं. So it'll be easier. And here you go, Talha, we're touching 99. We have touched 100. Yeah, There you go. nice. So One we're or above two average now. officially, given Ramzan as well. Yeah. Great. Okay, so I'm going to end the poll here. Share results very quickly for you guys to see it. And stop share results. Okay. Guys, again, I would say Q&A box जो है उसके अंदर जो भी आपके questions है, I see Amir Morsaleen has drafted a proper question. So जो proper question है with a lot of details, please provide that. We'll be taking those. अगर बहुत not specific to what you're asking for type questions with, then it becomes difficult for us to answer as well, and we don't want to waste a lot of time as well, and we want to maximize the value for everyone. So what I'm going to do is very quickly go live on Facebook, and uske baad I'll start with the introductions, and then over to you, Talha. So let me just quickly broadcast it. Let me just figure this. Yeah, just give me 2 minutes. Payoneer, go live. Okay, great. We're live. So everyone, welcome to the webinar. Just to introduce our guest and the topic that we have, we are going to be talking about how to crack IT business in US, and we'll be discussing top trending skills in high demand. Our guest is Talha Masood, who is the co-founder and CTO Remote Base. He is also the official member of Forbes Technology Council. He's one of the most successful entrepreneurs of Pakistan and is managing a global team of top developer talent at Remote Base. The rest, I feel Talha can introduce himself better. So over to you, Talha, if you can introduce yourself and share a little bit about your personal journey of how did you end up at Remote Base, how did you found it, and what's in store for us in the future. Sounds fair. So, by the way, thank you for having me here. I know we've been planning it for a long time, so good that we had this opportunity to meet up. So my journey started when I was in my 5th semester back in JK. I think that was 2012. So somebody introduced me to freelancing. Okay, there's a website, Elance, proposal dollar. You'll get a gig out of it, and you'll be able to make money. So I put up a few proposals at one night, got a gig out of it, or uske baad I completed the job, got paid, and that changed my perspective towards everything. Like, hey, I can work from anywhere, I can earn from anywhere, and I necessarily don't need a job. So that was a good feeling. In 2013, I graduated from JK. I had a few offers with some local companies, and my family kind of pressured me into getting a job with a local company. Why? Because back in the days, remote work and freelancing was considered to be a taboo. मुझे भी याद है कि they used to say, I don't know what happens now, but they used to say कि अगर तुम freelancer होगे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी because nobody is going to take you seriously. There were a lot of things associated with being a freelancer, being a remote worker. So all in all, हर कोई day job करना चाहता था, at least in my perspective, in my circle. So I got a job in a local company, could only last there for 11 months because of a lot of factors. Once I was a freelancer, remote worker, I could never be in that office job where I had to prove myself, not because of work, but if I was not senior enough and all, and people used to say, since I'm not senior, so the opinions are not welcome, and there were a lot of other things. So in 2014, I left that job and just decided that I'm going to be a full-time remote worker. That was a big thing to say back then. Like, my family was not very much in favor of me leaving a stable job and trying to become a freelancer. I took the step in 2014 and so started applying here and there and got a very good job with a Silicon Valley based company. So it was a full-time remote job, and I couldn't believe it was through Elance. So it was a Silicon Valley based company, good pay, good working hours. You get to work with top of the top. And
was really good. So I started. The company was Notable.com. It was a Silicon Valley based company. Had 52 remote engineers working within the company, and we used Slack was very new back then, and we were using Slack and Trello. So I started working with this company, and one of the first things that I realized working with a Silicon Valley company back in 2013 was that everybody in the company had a very product mindset. Everybody wanted to be a product engineer that way. Everybody had like opinions about the product they were working on. They had very strong opinion that everybody was capable enough to ship a feature into production and also own it as well, like technical debts and everything. So that was very new for me. And by the way, it wasn't the same culture in Pakistan back then. I know it has changed a lot now, but it wasn't the same. Why? Because we were very service oriented back then. Like everybody used to say, okay, this is the client, and this client has a few requirements. And being an engineer, you just need to follow whatever the client is saying. The client is right, and all that. So it was a very different mindset in Pakistan. And when I started working with the Silicon Valley based company, the mindset was pretty different and was very new for me as well. I got to become a very good product engineer. By the way, on a side note, here in the Bay Area, Silicon Valley, we prefer an engineer to have a product mindset now. And it's very, very important, and is a very important part of our interview process as well. Okay, we try to determine if the engineer has a product mindset or not. Anyways, fast forward, I worked in this company for 2 years. It, by the way, became a $1 billion company as well in the later years, was acquired by WeWork. And then I left this job in 2016, went ahead and worked with some other Silicon Valley based companies, entered blockchain, started learning AI, and I was flourishing as an engineer. And until 2018, when I started a company, a software house in Pakistan, known as Creative Morph with my current co-founder, Qasim. We started this software house, and it lasted until pandemic. We lost all the clients to pandemic, and it was 2020 when we decided to, do something different. So it was pandemic, like COVID was at large, har tarah se, and we were like, किस तरह जो है वो we capitalize on this कि पूरी दुनिया में engineering की बहुत ज़्यादा demand है, how to make sure कि we become part of it. So instead of laying the foundation of a software company, a software house, we decided to go for a different model this time around. What we did was कि हम लोगों ने Silicon Valley के सामने, we just presented the Pakistani market. Here are the engineers working with us. Let's just place these engineers directly into Silicon Valley based companies. Let's not take on projects. Let's not, try to do it on our own. Let's just provide these great companies with great engineers. Just do the match and be done with it. We got our first client. I think, onboarded 4 engineers into with this client, worked really well. Then we got other clients as well. And until 2021, we were doing really well with this model. Atif Awan decided to invest in us in March 2021. We raised our seed round of 1.5 million. I moved to the US also around this time after the investment was done, because I wanted to take care of the operations here. We are primarily based in the US. And hence, the foundation of Remote Base was laid. Currently, I think we have around 140 people working in the company. The company is growing very rapidly. We have clients like Swivell. I think Swivell has 25, 26 engineers working from Remote Base into Swivell. And then we have all sorts of tech giants, billion-dollar companies here from the Bay Area as well. So pretty exciting. I don't want to spend a lot of my time on my story. I know people have a lot of questions here. No. But in short, I'm a freelancer tha, and I turned out to be somebody who can company chala raha hai. This can happen for everybody. Like, once you realize that you have something that the world needs, so it becomes easier for people to I be in think that the position. Introduction was very, very important. And one of the reasons is that it is an inspiration in itself, and it is a path जिसके बारे में हम बात करते हैं, and you've done it very successfully. So very, very exciting. एक छोटी सी request आई है, a lot of people, which shouldn't really happen, because अगर आप international market के साथ deal करेंगे तो आपको अंग्रेजी में बात करनी ही पड़ेगी. लेकिन for everyone's understanding, हम इसको bilingual तरीके से कर लेते हैं. So थोड़ी बात उर्दू में करेंगे, थोड़ी बात इंग्लिश में करेंगे. उर्दू में कर लेते हैं. More than happy to do that. Let's do that. So
Talha, when you started Remote Days, you had 4 engineers. And you're currently basically, training those engineers, forming the teams, और फिर आप companies को उनको link कर देते हो. Okay? In your Acha, let experience, me so what we do at Remote Base is we hire talented engineers from all around the world, and then we place these engineers into US based companies. So they work with these companies directly, top of the top teams के साथ लोग directly काम करते हैं, पूरी ownership, and they work with them as they are, part of their ecosystem, and also that's what we do. Absolutely. अच्छा, so in your introduction, दो सवाल जो मेरे पास आपके लिए हैं. One is you talked a lot about product mindset. So I do see we have a lot of engineers and IT professionals with us. I think there was 21%, and a lot of them had IT companies as well. So number one, जो हम लोग बात करेंगे वो होगी कि product based mindset, because right now what they're doing is they're primarily being service providers. So if you can talk a little bit about the difference क्या है between being a service provider and being a product based company, or having that product based mindset, because eventually the money is going to be in product and not just providing services. So उसके अंदर क्या scope है, US की market कैसी है, उसके अंदर पाकिस्तानी किस तरह साइज अप कर सकते हैं अपने आप को, ये स्किल्स जो है उनको बेहतर कर सकते हैं. सो इफ यू कैन फर्स्ट शेड लाइट ऑन दैट, एंड देन जनरली एज वेल, व्हाट आर द टॉप ट्रेंड्स, आईटी स्किल्स क्या क्या आपको लगता है कि यूएस मार्केट के अंदर फॉर कंपनी व्हिच इज बेस्ड इन पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियल फॉर देम टू क्रैक देयर, एंड वहां पे किस तरह के टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड हाउ कैन वी कम टू दैट लेवल. अच्छा, sounds अगर मैं खाली उर्दू में बात करूं, and I cannot emphasize enough on this के प्रोडक्ट माइंडसेट होना. अगर आप कभी भी किसी भी सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी के साथ या स्टार्टअप के साथ, जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव दैट प्रोडक्ट माइंडसेट. सो फॉर एग्जांपल, I have limited experience working with local Pakistani companies, let's be honest, क्योंकि मैं सारी जिंदगी फिर सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज के साथ काम करता रहा हूं. बट द लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव फ्रॉम देयर, उसमें यही था कि यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस अंटिल यू हैव सीनियरिटी में, आप बहुत लैडर पे कुछ किसी स्टेज पे पहुंचे, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट. अब मुझे नहीं पता, थिंग्स माइट हैव चेंज एंड शुड चेंज, क्योंकि बहुत फंडिंग आ गई है, स्टार्टअप्स आ गए हैं और बड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग आ गए. बट बैक इन द डेज वो बड़ा सर्विस ओरिएंटेड था, एंड आई थिंक इंडिया हैड द सेम प्रॉब्लम. फिर उसके बाद जब यही इंजीनियर्स थोड़ा लैडर पे ऊपर जाते हैं, बाहर की कंपनियों में अप्लाई करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल फैन से नीचे वाली कंपनीज में स्टार्ट में, तो एक चीज बड़ी लैक करते हैं. मुझे हमेशा ये बात सुनने को मिलती थी कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग होते हैं वो बड़ा सर्विसेज माइंडसेट रखते हैं, लाइक वो क्वेश्चन भी नहीं करते कि प्रोडक्ट माइंडसेट होता क्या है. एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, प्रोडक्ट माइंडसेट ये होता है कि you necessarily don't have to make a product to have that mindset, although बनाना पड़ता है आपको. बट कहीं भी आप किसी भी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, यू वर्क विद एनी कंपनी, एनी स्टार्टअप या कुछ भी, जितना छोटा या बड़ा हो, हैविंग अ प्रोडक्ट माइंडसेट मींस के यू आस्क कि आप जो कर रहे हैं आज वो क्यों कर रहे हैं, या इससे कुछ बेहतर हो सकता है. एक बड़ी मशहूर बात है रिमोट बेस में जो हम हमेशा कहते हैं, और यहाँ बहुत से इंजीनियर्स रिलेट कर सकेंगे उस बात से, कि एक अच्छा इंजीनियर होता है, उसे जीरा के या किसी चीज के टिकट्स नहीं ड्राइव कर रहे होते, उसे प्रोडक्ट की फिक्र ड्राइव कर रही होती है. मतलब कि और उसी के अराउंड वो अपनी साथ लगा देते हैं कि प्रोडक्ट को बेहतर कैसे किया जाए. सो फॉर एग्जांपल, जहां मैं रहता हूँ या जो लोग रहते हैं वो कोई फेसबुक पे काम करता है या गूगल में काम करता है या वीसा में काम करते हैं. तो दी अदर डे मैं बाहर जो है रनिंग पे गया होता है, आई मेट समबडी जो कि एक कंपनी है हुलू, उसमें काम करता है. हुलू नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर है यहाँ अमेरिका में, डिजिटल कंटेंट सर्व करता है, जो भी नेटफ्लिक्स का मिशन है. खैर, सो हुलू स्ट्रीमिंग कंपनी है, तो वो हुलू में काम कर रहा है. तो आई आस्क लाइक व्हाई डिड यू लीव योर XYZ कंपनी और हुलू में गए. तो उसका यही था कि वो हुलू यूज कर रहा था, और नेटफ्लिक्स में होता है कि जब एक एपिसोड खत्म होने वाली होती है तो साइड पे नेक्स्ट एपिसोड का बटन आ जाता है, यू माइट बी एबल टू रिलेट टू इट. वो हुलू में नहीं आता था, और ही डिडंट लाइक इट एज वो प्रोजेक्ट में से वो चीज, तो ही अप्लाइड इट टू हुलू. उसने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन इस पे बेस की कि आई वांट टू फिक्स दीस प्रॉब्लम्स जो एज अ यूजर मुझे आई, वाज हायर्ड इनटू हुलू. हुलू वो सारे काम करते. तो प्रोडक्ट माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है, उस चीज को बड़ा सराहा जाता है हियर इन द यूएस कहीं भी. तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि whatever you're working on, you are able to ask questions कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या ये जो मेरा काम है ये किस तरह लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, मैं इसे बेहतर किस तरह कर सकता हूँ. ना कि आपके बॉस के टिकट्स आपको ड्राइव कर रहे हो कि अच्छा लॉग इन में ये जो 2-4 चेंजेस कर दो, आप सुबह आते हैं वही काम करते हैं बगैर पूछे चले जाते हैं.
एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव सीन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जो ये करते हैं, लाइक, और वो बस समझते हैं कि जो बॉस या क्लाइंट कह रहा है वो ठीक बात है. नॉट नेसेसरली एंड नॉट ऑल द टाइम. बीइंग एन इंजीनियर आप हमेशा सवाल पूछ सकते हो और पूछने चाहिए. एटलीस्ट यहाँ पे इस चीज को बड़ा अच्छा समझा जाता है. फिर सेम चीज हम लोगों ने रिमोट बेस के अंदर इनकलकेट की, के फ्लैट हायरार्की है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है. जो भी बंदा एक इंटर्न लेवल पे है वो भी वही सवाल पूछ सकता है जो कि मैनेजेरियल या बड़े लेवल पे है. और उसकी वजह से एक ऐसा कल्चर रिमोट बेस के अंदर बन गया कि वी हैव अ फ्यू पीपल जो कि अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं और दे आर स्टिल वर्किंग इन रिमोट बेस विद सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज, बिकॉज दे हैव दिस, उनके पास सेम पावर है दैट एनी सीनियर इंजीनियर हियर इन द कंपनी हैज. तो दैट हैज हेल्प्ड अस कम अ लॉन्ग वे. ये सिर्फ ये चीज के we let everybody have that, capability या chance to ask questions and have that mindset जहाँ सारे प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं. So that's what I feel होना चाहिए. Absolutely. I think आपने अपना जो पर्सनल जर्नी है उससे काफी ज्यादा लर्निंग्स लेके you've applied them on your Exactly. So मेरी पहली so my first job जो कि सिलिकॉन वैली कंपनी के साथ ही नोटेबल था, दैट चेंज्ड एवरीथिंग. बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया उसने. लिटरली एवरीबडी वाज लाइक, एक आम इंजीनियर होगा वो सबवे में बैठा होगा और अगर स्लैकिंग कर रहा होगा तो वो बता रहा होगा अच्छा मुझे ये ख्याल आया था, प्रोडक्ट नई चीज हमें चाहिए. वो इस हद तक ओनरशिप लेते हैं. और यही चीज फिर मैं इन सारे टेक जाइंट्स में देखता हूँ. हमारे एडवाइजर्स भी हमें यही कहते हैं. एंड हेंस हम लोगों ने जब वही चीज रिमोट बेस में भी इम्प्लीमेंट की तो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड थिंग फॉर अस. A lot of questions are from the engineering side. So my first question would be कि a remote base के अंदर आपके पास पाकिस्तानी engineers that you're working with वो कितने हैं? And what kind of skill sets do you feel कि सबसे ज़्यादा आप उसको support कर पाते हो for the companies that you're serving? Let me give this a broader answer कि पाकिस्तान से I cannot like pinpoint the exact number, वो मुझे भी नहीं याद, लेकिन 19 शहरों से, like 19 different cities in Pakistan people. So remote base is fully a remote company, like internet के ऊपर ये लोग exist करते हैं और हर कोई remotely काम कर सकता है. So 19 पाकिस्तानी शहरों से we have engineers, and then we have engineers from Saudi Arabia, from Ghana, from Nigeria, and from Argentina और बाकी मुल्कों से भी हैं. तो that is that. पाकिस्तान से कितना बड़ा परसेंटेज, मेरे ख्याल में I think 60-70% or probably 80%, more than 80% of our engineers right now are from Pakistan. और हम लोग for the longest time पाकिस्तानी engineers के साथ काफी ज्यादा काम करते रहे. इनफैक्ट कि हमें कोई अगर इंजीनियर मिलता है पाकिस्तान में who has been like working in the services model for a very long time, तो हम उसे सिलिकॉन वैली माइंडसेट देते हैं कुछ महीनों में. लाइक अपने हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग बूट कैंप्स हम लोग रन करते हैं रिमोट बेस के अंदर. सो और वो बहुत मुश्किल नहीं होता. लिटरली हम उसे रिएक्ट या बाकी कोडिंग नहीं सिखा रहे होते या नोड नहीं सिखा रहे होते या पाइथन नहीं सिखा रहे. सिर्फ उसके सॉफ्ट स्किल्स को हम लोग पॉलिश कर रहे होते हैं कि बात किस तरह करनी है, सवाल कैसे पूछते हैं, प्रोडक्ट माइंडसेट क्या होता है, वैसे माइंडसेट क्या होना चाहिए, एज एन इंजीनियर आपकी इंक्लिनेशन क्या होनी चाहिए. मतलब कि एक एटिकेट होता है कि इंजीनियर होने के भी बड़े एटिकेट्स होते हैं. सो वी ट्राई टू इनकलकेट those into these engineers. And as far as कि कौन से जो है skills important है, so at remote base we have a lot of MERN stack engineers. हम लोग basically application startups के साथ primarily काम करते हैं. वो आगे application development पे काम कर रहे होते हैं. बड़ी companies like Civil जैसी companies जो है वो MERN पे based हैं. या सिलिकॉन वैली में जो है MERN stack बड़ा है. MERN stack क्या है? फ्रंट एंड रिएक्ट पे है, बैक एंड नोड वगैरह पे है, या डेटाबेस आप कह लें मोंगो है. तो वो लिटरल मीनिंग है उसका. लेकिन आजकल जो चीजें बहुत ज्यादा हाई डिमांड में स्किल्स हैं वो बेसिकली फ्रंट एंड पे रिएक्ट है और बैक एंड पे ऑन द क्लाउड है. क्लाउड में भी मतलब एक चीज हमारी कंपनी में ये भी बहुत कही जाती है कि हम लोग अब एप्लीकेशन डेवलपर नहीं रहे, एप्लीकेशन इंटीग्रेटर रह गए. सो ऑफ द शेल्फ बड़े क्लाउड सॉल्यूशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट जो है अमेजोन एम्पलीफाई पे बनाया हुआ है. ग्राफ क्यूएल की एपीआई है. I'm sorry थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन वो लैम्डास वगैरह है, ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह बहुत हद तक ऑटोमेटेड है. तो बेसिकली जो है ये स्किल्स बहुत हॉट है. आपके क्लाउड हो गए, AWS GCP हो गए, या एजर भी हो गए. इट्स बीइंग यूज्ड ऑन द फ्रंट एंड. रिएक्ट की बहुत ज्यादा क्वेरीज या डिमांड है. ऑन द बैक एंड जो है नोड पे जो है बहुत ज्यादा काम हो रहा है. So generally जो है वो by the way at remote base we primarily फिलहाल hire for the MERN stack या ROR पे, sometimes for Python as well. and अभी हम लोग जो है Go पे move कर रहे हैं आगे. So that's what we have at remote base.
Yeah, so being a marketing professional, मुझे शायद इतनी technical lingo समझ नहीं I आएगा, can but get that, yes, ले जाना नहीं I'm चाहता sure, तो उससे but I'm sure the audiences which are primarily from the IT circle, unko, I'm pretty sure that they learned a lot from it. So my next question would be, for example, if there's an IT company which is now that you're well entrenched over there and you know the industry there, what's your advice for IT companies who are based here in Pakistan and who are doing software development and they want to crack or break into the US market? What's your advice in terms of the products that they should be developing, in terms of services they should be providing, or how should they be approaching it, and how should they be cracking clients there, or what basically the overall journey unka kya hona chahiye? Because you also have done pretty much a similar thing and then moved on to remote base. So what's your advice for Pakistani IT companies at the moment? अच्छा, इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन हियर कि उन्हें बेसिकली एक आपकी इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली एज वेल, आपकी पाकिस्तान में एक आईटी कंपनी एंड यू वांट टू एंटर द यूएस मार्केट, आप अमेरिका के क्लाइंट्स आ रहे हैं और फिर देन अगेन यू वांट टू एक्सपैंड योर टीम हियर या अपनी फुटिंग अच्छी जा रहे हैं, एंड वी हैड द सेम आइडिया व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ 2018 में, प्रॉपर मतलब क्रिएटिव मॉर्फिक सॉफ्टवेयर हाउस वी बिल्ट एंड हैड द सेम प्रॉब्लम के मतलब क्लाइंट ढूंढना वाज अ डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि एक तो कंपटीशन भी बहुत है और विजिबिलिटी भी उस तरह से कम है. सो बड़ी एक मजे की बात है कि व्हेन आई मूव्ड इनटू द यूएस, तो एक क्लाइंट था, उससे मेरी मीटिंग थी, हम रिमोट बेस में उसे ऑनबोर्ड कर रहे थे उसकी कंपनी को. So we had been chasing him for the past 2 years, and the only reason he was not replying is because उसे लगता था कि बस ये कोई junkies हैं जो मुझे बार बार ईमेल कर रहे हैं या कुछ इस तरह से. When I met the guy, और उस तरह उसका perspective बड़ा change हो गया. तो एक चीज जो कि बहुत बुरी है एटलीस्ट यहाँ सिलिकॉन वैली में, कि अगर कोई बंदा आप पे इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो ही और शी शुड बी एबल टू टच यू. अगर आपको हाथ लगा सकते हो उसका मतलब है कि आप गोल्ड हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. आप पाकिस्तान में है, रिमोटली ही आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं ना. अमेरिका अगर शुरू में आप नहीं आ सक रहे या इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो कि हमारे भी सेम स्टोरी थी, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. क्या हमने कुछ टेक्निक्स लगाना शुरू की, मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे. सो और बहुत से स्टार्टअप्स ऑलरेडी कर रहे हैं. सो कोल्ड ईमेल इज नंबर वन, के यू स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग दीज पीपल, जो कि बहुत अच्छे टूल्स हैं अवेलेबल आउट इन दी ओपन. आई थिंक हंटर आईओ है, टक्सूबी में भी वो काम कर देता है कि यू जस्ट रैंडमली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल. अब कोल्ड ईमेल माइट बी कंसिडर्ड अ बैड थिंग, लेकिन दैट्स नॉट टू बैड इफ यू स्ट्रक्चर योर मैसेज इन वेरी गुड वे, और आप बाकी तन अगले की हेल्प करना चाह रहे हैं, लाइक यू हैव डन योर रिसर्च, और आपकी ईमेल ये बता भी रही हो कि ये तुम्हारे दो चार मसले हैं और ये हम इस तरह हल कर सकते हैं पूरे इन जेन्युइन तरीके से, बी एज ट्रांसपेरेंट एज यू कैन बी. So it might get some traction या attention के, because the other person sounds like they know where you're lacking या आपका ये मसला है, and they have done their research and they have also a solution around that problem. ये भी एक तरीका हो जाता है. दूसरी चीज ये कि start building a network in the US. दोस्त बनाए. जो काम यहाँ पे सिलिकॉन वैली में हम लोग दोस्ती से निकलवा लेते हैं, ट्रस्ट मी, दुनिया में मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पॉसिबल है. अगर मेरा दोस्त एक अच्छा वीसी है यहाँ है इन द बे एरिया, तो देयर इज अ हायर चांस कि आई गेट फंडेड इजीली. व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू ट्रस्ट मी, या जो भी रिलेशन. तो वो करने का पाकिस्तान में बैठने का क्या तरीका है. So in COVID में I wasn't in the US and my co-founder Qasim was also not in the US. सो अब अमेरिका में ना होने का मतलब था कि हम लोगों से मिल नहीं सकते, तो वी स्टार्टेड अ पोकर ग्रुप के, जहां हमारे अमेरिकी दोस्त आते थे, वो पोकर खेलते थे ऑनलाइन. सुबह 6 बजे हम पाकिस्तान से ऑनलाइन, उनके शाम हो रहे होते थे, ऑनलाइन पोकर खेलते थे. दैट गॉट वेरी इंटरेस्टिंग, और दोस्त उनके दोस्त आना शुरू हो गए और लोग आना शुरू हो गए, और एक ऑनलाइन ही नेटवर्क बनना शुरू हो गया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि हमें पता चली कि somebody was interested to working with us, और उस तरह करके. सो पाकिस्तान बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है. एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ये कि the world has changed, the world is not the same anymore. For example, इस टाइम मैं सिलिकॉन वैली बैठा हूँ, लेकिन मेरा सिलिकॉन वैली बैठने का as such इतना फायदा इसलिए नहीं है, बिकॉज इवन अगर मैं मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, दे आर ऑनलाइन. सो द वर्ल्ड हैज मूव टू अ पॉइंट जहाँ पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है ऑनलाइन. तो चाहे मैं अमेरिका बैठा हूँ या चाहे मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, बहुत हद तक इम्पैक्ट सेम हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग्स में. लेकिन वी हैव टू बी लाइक 100% अपने साथ ऑनेस्ट है कि
whatever we are going to do, we are just trying to help the other person out. कोई business नहीं है, कोई पैसा, सब कुछ आ जाता है, like honestly सब कुछ मिल जाता है, लेकिन you really have to help the other person out. चाहे वो cold email से हो जाए, चाहे वो किसी poker के group से हो जाए, literally जैसे भी हो जाए, but you are there out there to help people out. और in return पैसा तो हमेशा बाय प्रोडक्ट होते हैं इन चीजों का. यहाँ पे स्कार्सिटी नहीं है, सबके पास बहुत पैसा है. मतलब मेरे अलावा तो आई थिंक इट कैन इजीली बी डन अगर हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और जेन्युइन एफर्ट्स करें towards acquiring more clients. That's a very good advice, and I think the takeaway is that problem solving mindset hoga, so only then you're going to be even in your Exactly. cold calling, Exactly. cold emailing. You need to have that. We would have thought कि हाँ पोकर ग्रुप चला लें पाकिस्तान बैठ के. कौन ऑनलाइन, वो तो पोकर तो ये है ना कि आप, लेकिन चूंकि कोविड था हमें समझ आ गई कि ये चीज चल सकती है, इससे और नेटवर्क बन सकता है. तो लिटरली आई मीन, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोगों ने पाकिस्तान से ही नेटवर्क बनाया. ये तो अब नाउ वी आई हैव मूव्ड टू द यूएस, या कासिम हैज आल्सो मूव्ड टू द यूएस, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ. बट वो स्टार्ट इसी तरह हुआ था, कोल्ड ईमेल से या proper hustle, so like you hustle and keep on hustling. You have to really put yourself out there. Exactly. I mean, or then you have to like think like मैं अब बाहर हूँ, मैं बाकी help करने निकला हूँ, not कि ठीक है 2-4 proposals डाल दोगे मिल गया तो ठीक है. Literally it never works that way. Either you are a freelancer या business चला रहे हैं, क्योंकि same है, freelancer individual services दे रहा है, business has a business services दे रहा है या कुछ भी, तो you really have to be in that mindset where you are able to help other people out. Great. I think अभी किसी ने question पूछा था, is it important to meet the clients over there? So I think that question is pretty much answered. You just need to be very creative about how you're going to connect and how you're going to go. Just like thinking out loud, I'm not sure. As you mentioned, poker groups. So are there other like Discord के ऊपर कोई communities हैं that we can join? 100%. 100%. Anywhere. That's 100%. Going to be, yes, very beneficial as well. और वैसे भी people can reach out to me. अगर अब तो specifically क्योंकि first hand experience है या मैं point of contact बन सकता हूँ, feel free to reach out to me on LinkedIn. I can make those connections. Again, लोगों के अपने network को utilize किया करें. और ये बड़ी important बात है. And I know कि it's difficult because मेरे लिए computer के सामने बैठ के probably ज़्यादा meaningful काम मैं कर सकूँ, लेकिन literally networking is as important as anything. Like you're as successful as your network is. Let's be honest. So if you can reach out to somebody जो अमेरिका बैठा है या आपको connect करा दे, literally बहुत मुश्किल लगता है. और आप cold किसी को message भी कर सकते हैं LinkedIn पे कि you live in the Bay Area, you're from Pakistan, can you help me connect to that person? अगर आपके network में और यहाँ कर देते हैं लोग help. It's not a problem. मिलना जरूरी है, बट अगर आप एब्सोल्युटली नहीं मिल सकते, बहुत तरीके उसके अराउंड है. So that was actually going to be my other question. So usually whenever we talk about cold calling or cold email, उसके अंदर हम लोग को conversion ratio देखनी पड़ती है कि अगर 2000 लोगों को email भेजे तो probably 10 जो है they might be likely to reply to it. So do you have, when you guys were doing it, उसके अंदर क्या कहते हैं, what was your conversion rates like, your response rate? Because what happens is a lot of people get very disheartened जब उनको reply नहीं मिल रहा होता, and then they just abandon it altogether. So 100%. अच्छा, सबसे पहली बात, disheartened होने की जरूरत नहीं है. cold emails आप नहीं कर रहे, they could be automated to some extent. Tools हैं ऐसे जो कि automation ले आते हैं. You just have to, and it might sound very sleazy, but it's not. Literally it's not. Why? Because मतलब अच्छा पहले हम उस पे आके कन्वर्जन रेट क्या है. मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का जो ईमेल ओपनिंग रेट है वो अच्छे समझा जाता है इस इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से 15 to 20% मेरे ख्याल से. और अगर आपका 2 से 5% क्लिक रेट भी है कि बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट की सर्विस पे आ जाता है या बात कर लेता है या कैलेंडली पे आपके साथ कॉल बुक कर लेता है, मेरे ख्याल में ज्यादा मेक्स मोर सेंस कि कैलेंडली पे कॉल भी कर ले, तो वो इज अ गुड, अच्छा रेट समझा जाता है. और फिर देन अगेन डिसहार्टन होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि यू आर आउट देयर टू हेल्प पीपल आउट. मे बी एक बंदा नहीं समझ रहा, दूसरा बंदा समझ ले, एंड यू जस्ट हैव टू बी राइट वंस. तो क्या मतलब है कि अगर आपने 10,000 ईमेल्स किए उसमें से एक कन्वर्ट हुआ, तो एक कन्वर्जन गोज अ लॉन्ग वे. यू डू अ रियली गुड जॉब विद दैट क्लाइंट एंड दे ब्रिंग देयर नेटवर्क. सो बेसिकली आप नेटवर्क इफेक्ट की तरफ जाते हैं कि एक क्लाइंट आपका वो इतना खुश होता है कि वो औरों को बताता है, फिर ओके यू जस्ट हैव टू बी राइट मंथ. तो डिसहार्टन होने की तो जरूरत ही नहीं है ना. एक भी लीड मिल जाए, और एक लीड तो सबको मिल सकती है.
अब नहीं 3 महीने बाद, 3 नहीं तो 6 महीने बाद, पर वंस यू गेट दैट लीड एंड यू आर इन द राइट माइंडसेट कि आप वाकई मसले सॉल्व करते हैं, you're gold. I mean, you have a long way to go from there. So I guess consistency and patience goes a long way. Acha, I'm तो going हर to चीज start. में I'm going to start taking a few questions as well क्योंकि हम लोग के पास काफी सवाल आ गए हैं. Some of them seem very specific, but some of them are general as well. So specific वाले मैं पहले जल्दी ले लेती हूँ. So Mohammed Jawad ने कहा है, does Silicon Valley companies work in other languages like Scala and Golang, and how do you see these languages adoption in the future? अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट स्काला, मैंने कभी काम नहीं किया, बट रिसेंटली आई हैव सीन कि गोलैंग की कम्युनिटी इवन ऑन गिटहब बहुत अच्छी हो रही है. लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स और बड़े एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं. In fact, the other day I was talking to somebody, और हम I mean comparison कर रहे थे React की community का with some other platforms या languages. तो Golang came up, और Golang has a very active community right now. We have a few companies जो कि Golang में अब काम कर रही हैं, and we have actively started hiring for this position as well. तो I think कि Golang has a long way to go. Not sure compared to JavaScript क्या सीन है, या मैं इस तरह की statements दे भी नहीं सकता because everybody, अब मैं ये कह दूंगा जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तो somebody is going to tell me कि नहीं मैं $1 billion कंपनी गोलैंग पे बना चुका हूँ. So none of it matters कि क्या चीज अच्छी जा रही है, but हाँ गोलैंग has a long way to go. Why? Because community बहुत अच्छी है, it's very actively being developed और बड़े अच्छे पैचेस आ रहे हैं. I haven't personally met anybody जो कि गोलैंग की community में कोई active है, मुझे वैसे बंदा ढूंढना चाहिए यहाँ पे. But overall I think Golang has a long way to go. Scala का मुझे idea नहीं, I've never worked with Scala. You're on mute. Sorry, yeah. Okay, उसके बाद इकरा का क्वेश्चन है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अच्छे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं पाकिस्तान से. And I'm going to connect this with another question. What are your thoughts about blockchain development in Silicon Valley? Also, is remote based working on blockchain development? A तो remote based I think फिर से थोड़ा clear कर दें कि what is the business model, and based on what technologies you feel are more futuristic, उनके ऊपर if you can share a bit. Sounds fair. अच्छा, रिमोट बेस में भी अगेन हायर, आप जैसे अच्छे टैलेंटेड लोग हम हायर करते हैं, डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज में. सो आपका सवाल ये बन सकता है कि कोई इस तरह का स्टार्टअप रिमोट बेस के साथ एसोसिएटेड है जो कि ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हो. एक स्टार्टअप है दैट हैज आई थिंक रेज्ड $100 million रिसेंटली. वेरी गुड स्टार्टअप दैट वर्क्स ऑफ ब्लॉकचेन. अच्छा, ब्लॉकचेन का आई स्टार्टेड वर्किंग इन ब्लॉकचेन 2016 से 2018 के दरमियान में. वाज इन अ वेरी लारेबल फेज. मैं वेब3 में काम करता था पर्सनली, इथेरियम ERC20 टोकन या कुछ इस तरह. I've forgotten a lot of it. So I've worked as a blockchain engineer in 2 सालों में. So currently I'm not very much connected with how blockchain is working and all. I've heard कि metaverse और इस तरह की चीजें बड़ी at large है, बहुत अच्छी जा रही हैं, और बहुत अच्छे blockchain के startups भी हैं यहाँ here in the Bay Area, Silicon Valley. I have one friend जो कि बहुत अच्छा स्टार्टअप कर रहा है ब्लॉकचेन की स्पेस में, लेकिन आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड कि बेसिकली ये स्पेस कहाँ जा रही है, या अगर इससे एसोसिएटेड सवाल आते हैं कि क्रिप्टो का क्या है, NFTs किस तरह प्रिवेल करेंगी या नहीं, तो आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद दैट. द अदर थिंग कि पाकिस्तान में कौन से एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान में हर किस्म के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं बहुत आराम से. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन जनरली it's difficult to find good engineers in Pakistan, or not because के पाकिस्तान में कम engineers हैं, it's mainly because के बहुत ज़्यादा देखें पाकिस्तानी market probably was not very ready थी engineering wise, लेकिन then a lot of money came in the form of investments. हमारे पास बहुत अच्छे startups आ रहे हैं जो कि बड़े engineering hungry startups हैं कि वो बहुत पूरे engineering की groups उठा लेते हैं. तो वैसे ही स्कार्सिटी आ गई इंजीनियर्स के पाकिस्तान में, बिकॉज एवरीबॉडी इज सो बिजी. बहुत ज्यादा है करने को, वो करने वाले कम है, एंड देन वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड इंजीनियर्स इन द रीसेंट पास्ट बिकॉज वी वर नॉट रेडी. तो आई थिंक दैट इज चेंजिंग. बहुत अच्छी चीज जो निकल के सामने आई है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब भी हम लोग वी एक्टिवली रिक्रूट रिमोट बेस में, हर टाइम हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं. So a lot of good people haven't even graduated. वो instead of doing internships या कहीं और, तो वो जल्दी से उन्होंने बूट कैंप लिया 6 महीनों का, रिएक्ट सीखी या कोई स्किल जो कि हॉट है या इन डिमांड है सीखा, और उसके बाद दे स्टार्ट परफॉर्मिंग रियली वेल. अच्छा, और फिर इस बूट कैंप के से मुझे आई वाज लाइक कि ये किस तरह पॉसिबल है कि आप 6 महीने में अच्छा इंजीनियर बना दें.
मुझे एक बात पता चली है कि इवन हियर इन द बे एरिया फेसबुक पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बूट कैंप से पढ़े हुए हैं। तो अगेन पाकिस्तान में हर तरह का स्किल सेट है, इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा, सप्लाई थोड़ी कम है, बट आई थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज विद पीपल गेटिंग अवेयरनेस। या यहाँ पे जो लोग राइट सवाल पूछ रहे हैं, लिटरली 6-6 महीने के बूट कैंप्स वाले लोग आर नाउ वर्किंग इन सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शिपिंग फीचर्स इनटू प्रोडक्शन और डूइंग ग्रेट वर्क। Yeah, so I think ये question बहुत ज़्यादा आया कि does remote base hire fresh graduates? So I think remote base hires fresh graduates, all people who are studying, and also trains them with their boot camp and all of that as well. So Exactly. If you pass our process, and our process is very rigorous that way. I mean, if you pass the process, that really means that you are in the top 1%, and we'll do everything in our powers. So इस तरह नहीं है कि हम fresh लोग बिल्कुल उठा के boot camps में डाल देते हैं. It happens, लेकिन उन सिनारियों में कि वो बहुत ही अच्छे इंटरव्यू, फ्लाइंग कलर में इंटरव्यू पास करते हैं। ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यू हैव बीन अ पीएचपी डेवलपर यूनिवर्सिटी के 2-3 साल, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे टॉप नॉच इंजीनियर हैं, फ्लाइंग कलर्स में आपने अपने इंटरव्यूज पास किए, एंड देन यू शुड बी आल्सो इन द राइट माइंडसेट। सिर्फ ये माइंडसेट नहीं है कि बस कोई नौकरी ले ली है, वो एक मिशन समझ के चलने के, हैव टू प्रोग्रेस इन करियर एंड ऑल। तो ऐसे लोग हम रख लेते हैं, उनका स्टैक चेंज करा देते हैं। लाइक देन अगेन getting into remote base, there is only one way to go about it, and you have to pass our interview process. Got it. I think that answers it fully. Asha, we have a question from Samroz. He's a CTO and co-founder of a software company from Pakistan. We're developing a product mobile application, would like to launch in US. I would like to know how we can do that. There are a few more questions. Do we need to register a company in US? How to get investment for the product? Can we take a product to Silicon Valley? If yes, then what would be the criteria? So I think this ties up to our previous question as well. कि जो अगर IT business Pakistan में है, how does it really take it to US? Or how does it get clients, and उसका journey क्या होना चाहिए in terms of registering there? थोड़े से operational सवाल हैं, but if you can just quickly go over it, because 2-3 सवाल इस तरह के हमारे पास हैं. Sounds fair. मैं sum up करने की कोशिश करता हूँ. So basically I think लोग समझना चाह रहे हैं, आया उनके पास अगर एक प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट कैसे शिप करना है यूएस मार्केट को, कि अमेरिकी कस्टमर्स यूज कर सकें या इन्वेस्टर्स का वो ध्यान में आ सके, get their attention, या फिर अगर आपके पास सर्विसेज बिजनेस है पाकिस्तान में तो how can you get more clients. So end goal is कि you start getting investors and clients from here in the US. Company register करना is very very important. Let me be very clear on that. Why? Because if you're working with somebody from here in the US, चाहे आप investment raise कर रहे हो या चाहे आपका वो client जो कि आपको पैसे देगा against your services, so they are more comfortable जब they are able to transfer that money into a US account or into a US based entity. I don't know, उसके around बड़े reasons हो सकते हैं, compliance के reasons हो सकते हैं, या फिर sometimes पाकिस्तान में ये होता है कि it becomes difficult कि आप पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं. Although पाकिस्तान बड़ा accepting मुल्क है, वो पैसे तो accept कर लेते हैं, but यहाँ पे compliance के मसले आ सकते हैं कि वो क्यों भेज रहे हैं. तो it's always a good idea if you have an entity registered in the US. And as far as launching the product here in the US goes के और इनके स्पेसिफिक सवाल का जवाब, इन्होंने सवाल पूछा कि हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, हमने प्रोडक्ट बना लिया, अमेरिका में हम इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं और अमेरिकी ऑडियंस चाहते हैं. अब ये बड़ा मुश्किल टू आंसर है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द प्रोडक्ट इज या वो किस तरह टारगेट करें. हाँ, बट मेरे कुछ सवाल हैं कि मैंने अपनी कस्टमर डिस्कवरी कर ली है फ्रॉम पाकिस्तान, या ये प्रोडक्ट है ही ऐसा जो अमेरिका में चल सकता है और कहीं और नहीं चल सकता. अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ अमेरिका में चल सकते हैं तो क्या उन्होंने अमेरिकी लोगों के साथ कस्टमर डिस्कवरी कर ली है जो कि यूज करेंगे? अगर तो हाँ है और कुछ ट्रैक्शन आना शुरू हो गई है, तो getting investors attention is not difficult because it's easy to raise money generally. आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन generally it's easy to raise money अगर आप, if you have the traction, if you have a product market fit, या फिर if you already know कि आपकी direction क्या है and all. If you don't have any of those और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं investment raise कर लूं, then probably it's going to be very difficult for you, and then probably you're also not in the right mindset. एक product है जो कि मसले सॉल्व कर नहीं रहा है, जिस पे कस्टमर डिस्कवरी नहीं हुई, या फिर जिसको भी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, मतलब कि आइटरेशन की जरूरत है, पिवट्स की जरूरत है, उसके लिए मुश्किल होता है इन्वेस्टर की अटेंशन को गेज करना, या उसके लिए मुश्किल होता है एक इन्वेस्टर को एंगेज करना.
बट वंस यू हैव द ट्रैक्शन, दुनिया में आप कहीं भी हो, यू कीप ऑन सेंडिंग. हमने भी यही किया था. सो वी केप्ट ऑन शेयरिंग नंबर्स विद मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड बहुत से, और आज भी हम यही करते हैं. वी गेट अ लॉट ऑफ उस तरह से engagements from these investors who are looking for good deals and all. तो if you have that, मुझे बता दें लिंक्डइन पे, आई कैन कनेक्ट यू विद सम पीपल. या फिर आजकल इस तरह का सीन है कि मिडिल ईस्टर्न जो इन्वेस्टर्स हैं, लाइक आई नो सम पीपल फ्रॉम श्रूक या फिर सीड स्टार्स जो हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी स्टार्टअप. सो दैट कैन आल्सो बी अ राउट फॉर यू. इंस्टेड कि आप अमेरिकी मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, वो मुश्किलात समझें, देयर इज एन अल्टरनेट वे कि आप मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स को एंगेज कर सकते हैं. वंस यू हैव ट्रैक्शन, कुछ पैसा, और then you start entering the American market या अमेरिकी मार्केट. या फिर अगर आपने अमेरिकी मार्केट ही एंटर करना है तो then find somebody जो कि आपके लिए वाउच करें यहाँ बैठ के. या फिर then again very important है कि आप you have somebody here उसके लिए. Great. I think that sums it up. काफी लोगों ने इसके बारे में और भी सवाल किए हुए. So I'll take that in just a bit. There's another question. What is the scope of data science and machine learning in Silicon Valley? Can we get businesses that may need these services from Pakistan? So I think that ties up with the technologies wali part. 100%, like AI or ML or data science and a lot of others. So we at Modebase अभी लोग unfortunately नहीं करते वो काम. So I know somebody from Seattle जो कि एक मेरे ख्याल से एक कंपनी चला रहे हैं, डेटा साइंस डोजो के नाम से, समथिंग लाइक दैट. तो what they do is that they train people for बेसिकली boot camp पे, they train people for data science and then they help these people get a match here with the Silicon Valley based company. So बहुत ज्यादा scope है. If you are ML engineer या उस तरह से, if you are in that trajectory, so you can easily score a job here. There's a remote job because these positions are really, really hot. Great. Another question is remote based specific. When you directly link engineers to Silicon Valley based companies, so at the end of the day, will we be employing remote based or the company that they will be linking us with? So काफी technical सवाल. हाँ नहीं, it's a good question और मैं इसको in detail answer करना चाहूँगा. So you will be employed with remote base. You work with different. So what happens in remote base is, for example, let's say you get hired into remote base as a MERN stack engineer, React engineer, आप चले फ्रंट एंड इंजीनियर आप हायर हो जाते हैं रिएक्ट का. यू आर प्लेस्ड इनटू अ सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी जहाँ पे आप एज अ रिएक्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं. यू विल बी एम्प्लॉयड विद रिमोट बेस. रिमोट बेस इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दी एक्सपेंस, जो भी आपकी सैलरीज हैं, पर्क्स है, सारा कुछ है, वो रिमोट बेस जो है टेक केयर करेगा. फॉर एग्जाम्पल 6 months डाउन द रोड आप कहते हैं कि नहीं यार, यू डोंट वांट टू वर्क विद दिस क्लाइंट, या यू आर डन एंड यू वांट टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स. आप पाइथन के इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप फुल स्टैक बनना चाहते हैं, या आप बैक एंड पे आना चाहते हैं, कुछ भी, तो यू विल बी पुट इनटू अ बूट कैंप अंडर अ सीनियर इंजीनियर्स मेंटरशिप, जहां आपको नया स्किल सिखाया जाएगा. एंड वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट बूट कैंप, यू विल बी प्लेस्ड विद अनदर कंपनी, सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी, जहां पे आप उस नए रोल पे काम करेंगे. सो ऑल अलोंग यू आर ऑन रिमोट बेसिस, सिक्योर उस तरह से पेरोल एंड ऑल, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक hop between companies या different experiences ले सकते हैं, engineering के experiences and everything. So remote base stays on your back हमेशा, और उस तरह से आपको direction दे रहा होगा. Great. थोड़ा सा off, I think the market that you're in, but someone has asked about the UK market, कि उधर क्या क्या potential है, and is it different from US, and in terms of the services that are trending and the skills that are required and the type of businesses. So if you can just share a little bit about whatever you know about the UK market as well. जब मैं बात शेयर करना चाहूँगा, मैं कभी भी यूके नहीं गया अपनी जिंदगी में, और दूसरी बात ये कि pretty sure कि वहाँ भी टेक काफी हॉट. आई थिंक हॉपिन एक अच्छा स्टार्टअप है that came out of UK pandemic में, and within like 1-1.5 साल में it has a valuation of around 5 billion मेरे ख्याल से. So one of our advisors, he is the director of engineering at Hopin. मुझे इतना ही पता है कि वहां से हॉपिन निकला हुआ है. अदर देन दैट मार्केट की डायरेक्शन क्या है या कितनी तेज मार्केट वहां मूव करे मुझे नहीं पता. हाँ, एक चीज दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ कि जितनी तेजी टेक में सिलिकॉन वैली में, आई डोंट थिंक सो पूरी दुनिया में कहीं भी है. जितने जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन में नहीं, मतलब कि जो तादाद है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्टिवली इंगेज रहते हैं, एक्टिवली स्टार्टअप्स आते रहते हैं,
इन्वेस्टमेंट्स रेस करते रहते हैं, स्केल करते रहते हैं. सो आई डोंट थिंक सो दुनिया में कहीं भी और इतनी तेजी है, बट आई माइट बी वेरी बायस्ड क्योंकि मैं सिलिकॉन वैली रहता हूँ, यूके नहीं रहता. सो Great. अच्छा, इसके ऊपर फिर से I think you've answered it once, but इसके ऊपर फिर से आ रहा है कि how exactly do you win projects, personal relationships, any platforms, BPO companies? Please guide. We have been in this business since 2011, but we could not break the barrier of getting projects. If Talha bhai can help us in getting projects, okay, I will leave that. And is it necessary to visit US to get clients and projects? So I think Talha has already answered that. But then if there's anything in terms of platforms or how to form these relationships and soft skills की जो हमने बात की थी, if you can share a bit more on, how they can work on it. sounds fair. अच्छा, platforms का I wouldn't know because we don't use any platform. अब तो remote based की dedicated sales team है here in the US, so that works. और again वो भी network पे काम कर रहे होते हैं. In my experience, remote based बनाते हुए, so the only thing that helped us get projects is the network. हमारे बहुत limited सा एक network था बे एरिया में pandemic से पहले, जो कि हमने सब बड़ा curate किया, बड़ा nurture किया pandemic के अंदर पाकिस्तान बैठ के. Again, you just need one right link in the right place, जो कि आपको आगे एक बहुत खुश क्लाइंट 2 क्लाइंट्स और ले आएगा. एक बहुत खुश क्लाइंट में भी आपका एम्प्लॉय बनने को तैयार हो जाए कि ठीक है, let me crack the sales for you guys, और आप लोग let's commission sharing या कुछ भी. And it has happened to us a lot of times. So हमारी जो सेल्स की टीम लीड कर रहे हैं, वो बंदा was our client at remote base. His startup didn't work out, and now he's so sold on the idea. He believes in the idea. Then said, "I want to now work for remote base and lead the sales team here." So literally, I mean, just try to find that one sweet spot for yourself जहाँ से आगे आप कर सके. पाकिस्तान बैठे हैं, अफगानिस्तान बैठे हैं, बांग्लादेश बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं. It should not matter when you're starting. और फिर एक पॉइंट पे आप आ जाते हैं जहां यू नीड मोर ग्रोथ, जहां आपको ग्रोथ हंग्री हो जाते हैं, आपको बिजनेस की समझ आ जाती है सारा कुछ, देन प्रॉब्ली इट्स अ गुड आइडिया कि आप अमेरिका मूव करें. व्हेन वी वर रनिंग क्रिएटिव मॉर्फ सॉफ्टवेयर हाउस, पहले 1 साल हम लोग भी अमेरिका मूव नहीं किए थे. वी स्टेड इन पाकिस्तान. हर तरह के प्लेटफॉर्म से वी ट्राई टू स्कोर प्रोजेक्ट्स, हर तरह के नेटवर्क से वी ट्राई टू स्कोर प्रोजेक्ट्स. And we made sure that we have the team, we have the mindset and everything before हम वो बड़ा leap और jump लेते हैं. तो just find that one person जो कि आपको वो दिला दे, वो एक lead या कुछ भी, could be anything. And trust me, अगर आप अपने पहले client को ऐसे लेके चलेंगे, इसे इतना खुश करने के तो दुनिया का सबसे खुश बंदा होगा, तो मे बी आपका ये concern खत्म हो जाएगा कि यार next project कहाँ से आएगा या network कैसे बनाऊं. People again are very very helpful here, और अच्छे engineers की demand तो आजकल काफी ज्यादा. So now that we're talking about engineering, I think some marketer has also asked a question, Amir Mursaleen. What do you think is the scope of SEO in the Silicon Valley? Do they hire people? I have over 6 years experience in SEO. So do you feel digital marketing or SEO agencies, they have a scope for, it will be in a supporting role, but what's their scope? It's a tough question for me because मैं SEO खुद और remote based में भी हम लोग नहीं करते हैं. I'm not very familiar with the domain itself. Although we use a lot of SEO within remote based, लेकिन उसकी एक dedicated team है. तो I am very sure कि कोई भी, और I think it's also true कि जब एक कंपनी छोटी होती है तो they don't need any SEO. मेरा personal opinion है, people might differ. क्योंकि उन्हें बस पहले कुछ क्लाइंट्स या लीड्स या कस्टमर डिस्कवरी के लिए लोग चाहिए होते हैं. बट वंस द कंपनी ग्रोज और उन्हें फिर अपने ऑब्वियसली उन्हें थॉट लीडर भी बनना पड़ता है, अपना कंटेंट भी बाहर भेजना पड़ता है, ब्लॉग्स भी चलाने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है. तो आई थिंक एक एसईओ का बंदा वुड बी एज इम्पोर्टेंट एज एन इंजीनियरिंग पर्सन मेरे ख्याल से. वाई? बिकॉज एक इंजीनियर चीजें बना रहा है, वो सारा कर रहा है, लेकिन एक एसईओ का बंदा इज मेकिंग श्योर द राइट वर्ड गोज आउट इन द ओपन या आउट देयर फॉर दैट कंपनी. तो आई थिंक इस सवाल का, और अपनी लिमिटेड नॉलेज में मैं ये जवाब दूंगा कि एसईओ पीपल आर एज इम्पोर्टेंट एज इंजीनियरिंग पीपल, बिकॉज वो भी टीम्स बना रहे हैं या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ही बना रहे हैं किसी तरह से. Great. Osama Wajahat, I'm assuming the name is. What is the future of traditional technologies like ASP.NET in your opinion? That's a tough question. You get a lot of people जो कि .NET के होते हैं. You have to convert them. I'm not sure. Osama ने पूछा ना ये, तो Osama, I'm not sure कि
अच्छा, आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट हियर कि मुझे नफरत थी डॉटनेट, लाइक नफरत थी। मेरी पहली नौकरी जो पाकिस्तान में वाज, अभी तो उस कंपनी का नाम इन्फिनिटी यूज्ड टू बी टीआरजी टेक, तो दे वर वेरी मच ऑन द डॉटनेट स्टैक। मुझे तब भी नफरत थी, मुझे आज भी नफरत है। नॉट कि वो अच्छी या बुरी है, इट्स जस्ट कि इट यूज्ड टू बी वेरी क्लोज्ड सोर्स, और बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन या ओपन वो बड़े अरसे तक नहीं हुई थी, अभी करंटली मुझे नहीं पता। सो दे नेवर गॉट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ जो कि उन कंपनियों का जो बन रही है। फॉर एग्जांपल, जो बड़े ब्राइट लोग और बड़े फास्ट मूविंग लोग कंपनीज बना रहे हैं, वो डॉटनेट पे नहीं बना रहे, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं, और मेरा मशवरा यही होगा कि अपने आप को ट्रेन करें और फ्रेश टेक्नोलॉजी देखें। वैसे भी अगर आज हम रिएक्ट की बात कर रहे हैं, या नोड की बात कर रहे हैं, या AWS की बात करें, किसी भी इसकी बात कर रहे हैं, कुछ अर्से बाद तो ये भी ऑब्सलीट हो जाएंगे। रिएक्ट से अच्छा कोई डिजाइन पैटर्न आ जाएगा, या कोई अच्छी UI लाइब्रेरी आ जाएगी, कुछ इस तरह। तो इट्स जस्ट कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड रिगार्डलेस के डॉटनेट अच्छी है या बुरी है। बिकॉज एज और ये बड़ी अगेन एक बड़ी मशहूर बात है रिमोट बेस के अंदर, कि वी आर नेवर पेड टू राइट कोड, वी आर ओनली पेड एंड ऑलवेज पेड टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब तो चाहे वो डॉटनेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे वो PHP से सॉल्व हो जाए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट से सॉल्व हो जाए, सो योर जॉब एज एन इंजीनियर इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक गुड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली। Someone has also asked about ये दूसरी दफा पूछा है PHP and PHP frameworks and Laravel. I hope I'm pronouncing it correctly. Laravel, yeah, exactly. I mean, again, we directly we never place people जो कि on the PHP stack, not के कोई हम खिलाफ है उसके, but we don't have any companies that that is on PHP stack. But again, we have hired a few people, और अभी रिसेंटली भी अच्छे लोग हायर किए जो कि Laravel से के बैकग्राउंड से थे या PHP के बैकग्राउंड से थे, बट दे रियली जस्टिफाइड देमसेल्व्स। जो भी उन्होंने काम किया था, उन्हें सिस्टम डिजाइन बहुत सॉलिड स्पॉट ऑन था, जो भी कोड लिखते थे साफ सुथरा अच्छा कोड लिखते थे। सो वी ब्रिंग देम ओवर एंड वी जस्ट कन्वर्ट देम टू बी रिएक्ट या नोड इंजीनियर्स या कुछ भी। तो दैट वर्क्स। अगेन, इफ यू आर अ गुड इंजीनियर, आप PHP में काम करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, it doesn't matter, you will be able to justify yourself. Okay, I think now we're going to near towards the last question. So whoever has a question, last chance, अपने questions रख लें, because by 4 o'clock we'll be we'll be पूरा closing घंटा this. गुजर गया. By the way, it's 3:52 a.m. in the morning for me. सुबह के 4 Thank you बजने so वाले. much for taking time out for us. Usually हम थोड़ा late करते हैं, but रमजान की वजह से we had to make it a little early. Okay, so Adnan Zafar had a question. Do you suggest running any direct response marketing campaigns from Pakistan to get dev work from US? So Adnan, I think he's pretty much answered this question के आपको क्या-क्या चीजें करनी है. Okay. I am doing work in D3.js for data visualizations. Any future in Silicon Valley? This, and there was another question which I felt was interesting. What's the difference between TopTal, remote base, and crossover? अच्छा, so पहला सवाल D3 वाला. By the way, D3 has been around for a very long time. I think for the first time जब मैंने D3 use की थी was back in 2013. I don't know, remember. So and to answer it, सिर्फ D3 और data visualization is not going to get you a long way. Like ठीक है, आप अपनी डिफेंसिबिलिटी देखें ना एक चीज की। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन आती है, एक लाइब्रेरी आती है, तो खुदा ना खास्ता कल को वो लाइब्रेरी रिप्लेस हो गई या वो चीज ही ऑटोमेट होगी, किसी ने टूल बना दिया कि जो आप काम कर रहे हैं वो टूल से ऑटोमेशन हो गई उससे, तो यू वुड बी एट रिस्क या काफी बैड सीन होगा। तो अगेन मेरा मशवरा तो यही है कि ये ना कहें कि मैं D3 का इंजीनियर हूँ तो मैं सिलिकॉन वैली लग जाऊंगा, यानी इट डजंट वर्क दैट वे। इवन यहाँ के लोग ये नहीं देख रहे होते कि आप D3 में काम कर रहे हैं कुछ भी। तो यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर। गुड इंजीनियर क्या है? who's able to do remote work, ओनरशिप लेता है, प्रोडक्ट माइंडसेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है, अब इतनी पढ़ता है कि वॉशरूम में भी बैठ के पढ़ा होता है, फिर सारी प्लानिंग करके आखिर में कोड लिखता है। So writing code is probably does not qualify you as an engineer. बहुत से aspects होते हैं that you should be covering. So again, to answer it, being a D3 engineer doesn't matter. अगर आप अच्छे engineer हैं, you can still score a very good job here, remote job here in the Silicon Valley. और अगर नहीं कर सकते तो remote base join कर लें, will place you there.
दूसरी बात कि how is remote based different from all these top talent crossover, top talent crossover and Indela and Turing and all sorts of these companies. So by the way, one of the biggest things that we offer at remote base is the community itself. So if you are working in top tel या Turing या तो आप एक अकेले इंजीनियर हैं, ठीक है, you are placed, but you don't feel के you feel very isolated उस तरह से कि you don't have a lot of people to talk to या a lot of people to discuss your problems with. But at remote base we have a very strong community that runs on steroids. For example, somebody joins in, लोगों की responsibility होती है कि उनकी onboarding कराएं, mentors are assigned from this network, पूरा एक as a network काम कर रहे होते हैं ये community जो है. For example, let's say कि you are placed into a Silicon Valley based company और आपका पहला काम आपको मिला कि Stripe की integration करें. आप अगर somebody else has already worked on it, कोई और team उस पे काम कर चुकी है या कर रही है, immediately you post it on Slack, वो आ जाते हैं, they help you out and all. So the sense of community is very, very strong within remote base के we operate essentially as a network. Remote base itself एक पूरा बहुत बड़ा top 1% लोगों का network है जो कि आगे फिर उस network को बढ़ा रहा होता है या curate कर रहा होता है. So it's a big difference जो कि top tel या बाकी companies में, because top tel जैसी companies में you clear the process, उसके बाद जो है you wait to be get matched या आप खुद apply कर रहे होते हैं and all. And throughout this process, it's just you and some recruiter working with you, yeah, with the client. So पूरी community का factor जो है ना, that only remote based offers, and we've come a long way community or network wise, and we work really hard towards curating that. Yeah, and इसी को join करते हुए, so there's another interesting question. Do you encourage your employees starting IT business since the community is learning, the community is flourishing? Do you encourage? I think the mindset, entrepreneurial mindset is कि करना है अपना तो कर लो. I think sir, देखिए उसमें मेरा एक बड़ा वो है कि एक अच्छा इंजीनियर जो होता है ना, उसे वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए होता है, वो अपनी माँ, बीवी, बहन, भाई के साथ टाइम गुजार सके, और उसकी अपनी हॉबीज भी होनी चाहिए कि साइड प्रोजेक्ट्स और साइड हसल्स हो. वीकेंड का वो इंतजार कर रहा हो कि एक छोटी सी उसने ऐप बनाई हुई है, मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ रिमोट पे, अब वो ऐप चाहे एक आईटी बिजनेस बना ले या कुछ भी कर ले, इंटायरली अप टू देम. और रिमोट बेस में एक बड़ी खूबसूरत बात भी है कि आई कीप ऑन आस्किंग लोगों से कि जनरली कैसा जा रहा है. सो जो बड़ी फिट बात है रिमोट बेस के अंदर, यू गेट ऑल द लिबर्टी टू वर्क ऑन योर ओन टाइम स्केड्यूल, नॉट वेरी मच कि आप अंदर बाहर आधी आधी रात को काम करें एंड ऑल. जनरली वर्किंग आवर्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ना हम कोई टाइमर पुट अप करते हैं, ना हम कभी किसी से पूछते हैं कि इस टाइम क्या गए, जो कि जनरली एक कल्चर है. तो इट्स जस्ट द इंजीनियर्स वर्किंग विद देयर क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स खुश हैं उस टाइम जोन से, उस तरह उसके. तो इंजीनियर्स गेट अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू डू अदर स्टफ, घर वालों के साथ टाइम गुजारें, कोई पर्सनल हॉबी परसू करें, जनरली म्यूजिक परसू कर लें, कुछ भी. सो इट्स नॉट कि आप आईटी बिजनेस से स्टार्ट करें, आप कुछ और भी कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो आप हर हालत में सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे. यू कुड बी एनीथिंग यू वांट, और एटलीस्ट अभी इस कैपेसिटी में रिमोट बेस है, वी ट्राई आवर बेस्ट के वो सेंस हो इंजीनियर्स के पास कि दे कैन बी एनीथिंग और एनीबॉडी कैन. I think सबसे बड़ा positive point you mentioned right at the end, the work-life balance and the hours wala, because a lot very of people struggle with those hours very as well. Very important. And Talha, we've already started receiving, thanks Talha for such an insightful session. Bless you. Shukriya. Thank you for your time, kind of messages. So I hope our audiences really, really enjoy it. Someone has even left a heart there. So thank you, Talha, so much for detailed insights. So I feel that the audience has truly learned something today. Thank you, Talha. Great session. So Talha, thank you so much, and I'm really sorry for keeping you up at this hour. No, it's completely fine. It's completely fine. This was very helpful for our audience and very engaging session as well. So thank you to our attendees as well for putting the engagement there and asking questions. So thank you so much. And I think we all learned a lot, and I hope we can continue this session in the future as well and do a 2.0. 100%. People can reach out to me on LinkedIn as well. कोई help चाहिए कुछ भी, अगर आप लोग की शिकायत है कि अमेरिका में कोई है नहीं है उस तरह, तो दूर हो जाएगी. I can try my best to connect you guys. Sure. Someone is asking for Talha's LinkedIn profile. एक तो आप remote base को LinkedIn के ऊपर follow कर लें. दूसरा आप Talha Masood is his full name, so just look for it and search for it, and you'll find the LinkedIn profile. And thank you so much, Talha.
for taking time out for us. And I hope our attendees learned a lot. I already see that they have learned a lot. And with that, I'm going to close today's session. Shukriya. Shukriya, everybody. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.